Good morning, class 12th biology chapter biodiversity and conservation. जैव विविधता और उसका संरक्षण. Biodiversity, what is biodiversity? Bio means जैव, diversity means differences, distinctions, and different kinds of the living beings live together on the earth and with the great harmony. Okay, this is called the biodiversity. Biodiversity means different kinds of the species and organisms live together. Okay, that is called the biodiversity. In conservation, we have to conserve the biodiversity around us. There is need to have it to survive and to sustain life. There is need to sustainable development requires biodiversity conservation. Biodiversity means harmony among the various organisms at particular place. Okay, there are different kinds of the habitat. You know very well about that. There are the terrestrials, aerial, and aquatic. Okay, these are the habitat. Terrestrial means living organism live on the land. Aerial, the living organism who spend their maximum time in the air or sky. Okay, and another is the aquatic, the living organisms in water. So all those live to maintain the harmony of the nature. Biodiversity found in the unicellular and multicellular, and here's the organisms and plants, both multicellular plants and animals. You know, just like if we talk about the school as an example of the biodiversity school, students, teachers, workers, these are the human resources. Trees, plants, and campus, that is the vegetation. Bacteria, viruses, fungi, insects, animals, dog, okay, some garden lizard, okay, and the home lizard, in this way mongoose, snake, scorpion, and some other animals, birds, okay, sparrow, all those are form a biodiversity of this place. Birds and animals here is you have to read it. So biodiversity, the conservation. What is the conservation of the biodiversity? Conservation of biodiversity means we have to provide the well shelter, food, and the sustainable habitat for the living organisms and different species. If the one of the species or one of the organisms removed from the food chain, so it will be the harmful for the human beings and to whole biodiversity. देखिए सीधा सा है बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन जो है. बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि जैव विविधता, मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एक प्लेस में रहते हैं और हर जगह की अपनी एक बायोडाइवर्सिटी होती है. उसके स्पेशल जो होता है एडेप्टेशन होता है और स्पेशल उसका हैबिटेट होता है. जस्ट लाइक वी नो वेरी वेल अबाउट दैट. हम जानते हैं कि एरियल हैबिटेट होता है. एरियल मतलब जो ऑर्गेनिजम्स मैक्सिमम टाइम अपना एयर में बिताते हैं वो एरियल होते हैं. सारे बर्ड्स उसमें आते हैं, ठीक है. सेकंड हो जाता है टेरेस्ट्रियल. टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड एनिमल्स जो होते हैं वो हो जाते हैं. और एक्वेटिक जो होते हैं जो वाटर में रहते हैं मैक्सिमम, मतलब वो वाटर में ही रहते हैं, उनको एक्वेटिक बोलते हैं. और एक एम्फीबियंस होते हैं. एम्फीबियंस कैन लिव इन वाटर एंड लैंड. ओके, so these are all those. Just like if we talk about what is the harmony and what is the interdependency, not only harmony, there is need to interdependency. What kind? That is the example is here. Okay, we depend on plants for our food. Plants depend on us or animals for carbon dioxide. When we respire, we intake oxygen, which purified by the plants, and animals take
oxygen in their body for respiration and burning breakdown of the food to get the energy. And after that, that is the byproduct of this energy, glucose and carbon dioxide. So we exhale carbon dioxide which taken by the plant to prepare their own food during the photosynthesis. मीन्स हमारी इंटरडिपेंडेंसी ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे और प्लांट्स डिपेंड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, है ना. उनका फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो एटमॉस्फेयर में. तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन छोड़ता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म छोड़ते हैं जब वो रेस्पायर करते हैं तब. तो ये जो इंटरडिपेंडेंसी है यही मेंटेन करके रखी है पूरा बैलेंस. जो अर्थ का जो बैलेंस है, एनवायरनमेंट का जो बैलेंस है, यही बहुत इम्पोर्टेंट है. अब इसमें से अगर हम देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर कोई भी एक लिंक जो है हमारी फूड चेन में से चला जाए. फूड चेन क्या होती है? हु इट्स होम इज़ कॉल्ड फूड चेन. फूड चेन का मतलब है कि कौन किसको खाता है और उसकी एक लिंक बनती है पूरी, उसको फूड चेन कहा जाता है. जब बहुत सारी फूड चेन मिलती है तो फूड वेब बना लेती है. अब देखिए, हायर लेवल टू ऑर्गेनिजम्स, लोअर लेवल टू हायर लेवल जाता है. ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं इसमें, अपर लेयर तक, है ना. अब हम बात करते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि देयर इज़ अ ग्रास हॉपर. ग्रास हॉपर इट्स ग्रास एंड ग्रास हॉपर इटन बाय फ्रॉग. फ्रॉग इज इटन बाय स्नेक. स्नेक इज इटन बाय ईगल. ओके, इन दिस वे. मतलब ये पूरी लिंक है कि ग्रास हॉपर ग्रास को खाता है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा लेता है, फ्रॉग को स्नेक खा लेता है और स्नेक को ईगल खाता है. इसमें से एक भी अगर फ्रॉग ही ख़त्म हो गए तो स्नेक क्या खाएगा? सो दैट इज़ ये एक इंटरडिपेंडेंसी है तो हमारी फूड चेन को मेंटेन करने के लिए, है ना. और ये तभी हो पाएगा जब हम इसका कंजर्वेशन करेंगे. अब कंजर्वेशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. आप कहते हैं, एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं. अब वल्चर इज़ एंडेंजर्स स्पीसीज हो गई है बर्ड्स में. वल्चर जो है, व्हेन आई वाज चाइल्ड, ओके, जस्ट लाइक इन योर एज, आई हैव इन 3rd and 4th standard, I always saw the besides the road, along with the road, there are the group of the vultures on the just like the scavenger, dead body of the animals, just like the cow and buffalo, and they eaten up the more than 500 vultures there at that time. But what happened? Vulture is not seen now. Because why is it so? Because there is when the any animal, cow or buffalo or died at that time, there is a chemical used in the tanning the लेदर. जब वो एनिमल मरता, अगर डाई हो जाता है, डेथ हो जाती है उसकी, तो उसमें से जो कॉबलर होता है वो उसका चमड़ा निकालता है, तो उसके लिए केमिकल लगाता है. उस केमिकल और ये जो वल्चर्स थे ये उस डेड बॉडी को खा लेते थे. पूरा पूरा झुंड आता था, उसको खा लेता था. अब उसके खाने से क्या हुआ कि जब उनकी फूड चेन के अंदर वो चला गया, उन्होंने खाया तो उनके प्रोडक्शन रुक गया, रिप्रोडक्शन डिस्टर्ब हो गया, उनकी पूरी जो स्पीसीज थी वो ख़त्म होने लग गई. अब बहुत रेयरली वल्चर्स नज़र आते हैं. वल्चर मीन्स गरुड़, ठीक है. अब तो ये हमारा पूरा सिस्टम है बायोडाइवर्सिटी को बचाने का, और ये मैंने एग्जांपल दिया, यू हैव टू रीड इट. ओके, और इसमें क्या होगा? एंडेंजर्स स्पीसीज होगी, एक्सटिंक्ट होंगे, ठीक है, और जिनको सेव किया जाना ज़रूरी है. और कहाँ कहाँ है, जैसे गिर जो गिर लायन है वो सिर्फ गुजरात में और साउथ अफ्रीका में है, ठीक है. पांडा जो है, रेड पांडा और वाइट पांडा, ये सिर्फ बेम्बू चाहिए उनको, हिमालयन के जो मिडिल रेंज होती है उस पर होता है वो, ठीक है. सो इन दिस वे आप इसको स्टडी करेंगे तो आप समझ जाएंगे.